नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जेएनवीयू में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस की थीम इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें खास तौर से डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन का एम्प्लॉयमेंट पर प्रभाव जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इसमें वक्ताओं ने कहा कि ऑटोमेशन से परेशानी कम है और फायदा बहुत ज्यादा, बस कामगारों को अपने स्किल सुधारने की जरूरत है। क्या है ऑटोमेशन? कारखानों में बदलते दौर में व्यक्ति की जगह तेजी से मशीनें ले रही हैं। बिना मानव की सहायता से मशीन से हो रहे काम को ऑटोमेशन नाम दे दिया गया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट लगने से मानव जनित काम बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये रोजगार को प्रभावित करने लगा है, जिसको लेकर विशेषज्ञ चिंतित है। आशीष Godesar is from Mauritius, and Professor Ram Chaudhary from Calcutta University, my friend Dinesh Sharma Sahab from Maryland University, and Shiva Swami Sahab sitting very quietly among the audience from Botswana. The topic has affected me. Normally, in every conference, we always decide that we must go specialized and then super specialized on some specific aspect. But this conference has versatility. In fact, some very, very wide areas and their interrelationship have been established. So the conference obviously has become very important. Rather than going to the very fine things, we are going on wider things, but they are interrelationship, extending our barriers from science, technology to social sciences and commerce and management. Because some of my friends sitting here from Japan, coincidentally, I am remembering AI. One of the book we all are familiar possibly with that. That book is Homodeus. Homodeus book has been written by Harari, a Japanese, and he has become more popular because earlier he has written about Shapian, and now Homodeus book has done a revolution globe over. The fear he has extended, what the future human being will be. He has expressed his serious concern that he will be under control of robotics. Robotics will be really using human beings the way they will really like. I too was very worried. One of my friends, a leading scientist of this country, Professor Chidambaram, is advisor to Prime Minister, scientific advisor. I had a conversation with him. I expressed my concern to him. I say, sir, this is a very, very fearsome thing that may robotics will overcome human beings. Sir laughed and said, don't worry, Shiva. It will not. No creation can ever overrule Creator. And this wonderful answer has given so much encouragement to many of the scientists working globe over. Nowadays, science has there is no limit of science thinking. Say, if we will talk about CERN project very recently performed. This project was not permitted to perform for 15 years globally anywhere. We know it. And finally, when the permission was given, we were afraid that if this experiment will go anything wrong, the whole globe, the world will become a cricket ball. And we really discovered two wonderful things in that successful project of CERN. The first finding was, we by mistake call it God particle. Much enlightened. I feel much smarter than just being a Japanese. And that is partly because the
research topic that interests me the most is the contribution of India in the WTO, post-WTO a system, World Trade Organization, and so you know that as a major trading power, India has a lot of interest in diverse areas, trade law, and so I'd like to introduce 10 very new, interesting topics that India is involved. But for the time saving, I will limit to two issues. First of all, India's active involvement in the Arctic region attracts a number of scholars of WTO law. Arctic region is the area near the North Pole. So, as you already know, the North Pole is a bit too far from India or from Japan, but still, Indian government has chosen to invest heavily into shipbuilding and shipping industries to navigate through the Northern Sea route, the ocean that once covered by ice, but nowadays global warming has changed a lot. So this Indian recent involvement in the Arctic navigation is a huge research topic among the many WTO lawyers. And secondly, MSME's successful involvement into international trade is another very hot issue in WTO law. And Professor Christian Goyal and I made an application for huge government research funding for doing जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इनोवेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पर आधारित है। इस सेमिनार की स्पॉन्सरशिप में विश्व के कई सारे संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे देशों के पार्टिसिपेंट्स इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। आज इसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित यहाँ विशेष रूप से 2 जापानी प्रोफेसर्स, एक मलेशिया के प्रोफेसर और एक बोत्सवाना के प्रोफेसर तथा हमारे देश के कोने कोने से आए हुए पार्टिसिपेंट्स उपस्थित थे। और अब टेक्निकल सत्र चूँकि शुरू होने जा रहा है तो सब अपने अपने जो भी विषय हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट से संबंधित हो, उनके आपसी संबंध, इंटर रिलेशनशिप पर अपने अपने विचार, अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और इस सेमिनार की एक और विशेषता ये है, इसमें एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है जो पैनल डिस्कशन पर है। जोधपुर को मेज़बानी मिली है इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की, क्या कहना चाहिए? जोधपुर का राष्ट्रीय परिदृश्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शायद ये अधिकार भी था। उसका सहज कारण ये है कि देश में सबसे ज़्यादा जो सीए हैं वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रोड्यूस करता है। इस 3 दिवसीय सेमिनार की बात करें तो इससे क्या निकल के नया आएगा? देखिए, इसमें जितने समाज के लिए विज्ञान की उपयोगिता, समाज के लिए टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध और कैसे मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स में कैसे उसको समृद्ध बनाया जा सकता है, इसके लिए विद्वान आपस में विचार विमर्श करेंगे। थैंक यू सर।